it's so beautiful and so attractive and feels so good when you wear it. So I really feel good every time I do wear it now. आप अपने चॉइस में आप डिजाइनर क्लोथ्स प्रेफर करती हैं या ब्रांडेड या एनी? You know, actually, I would not say I don't wear. As in, when you say designer, yes, I do wear Anna. I do wear my friend Payal, who I'm very, very fond of. But otherwise, I think I'm a very casual dresser. And I think I only dress up when I have to go somewhere. Otherwise, I would go in jeans and a white t-shirt. Any wishes to a sports star who are going to? You know, I'm really happy about what's happening at the Olympics. But it also distresses me about the news that I keep hearing about the fact that they don't have, proper doctors to tend to their injuries, and the fact that they did not all fly business class in spite of the fact that there were business class tickets for all our sportsmen. I think India as a country, we need to encourage everyone. And it's not that we don't encourage them, but I think the facilities that are available for sports are not really available to many of them. It's available, I think, in terms of the cricketers. They get the best of the lot because I think we're a cricket crazy nation. But I really feel that when you say sports, it needs to go down to every last person that's out there to do something for their country and make their country proud. We just kind of stay in the background and wait till somebody really wins, and when they win, then we clap hands for them and then we forget them again. And I think that is something that needs to change. That spirit of sportsmanship is something that actually it's not the spirit of sportsmanship. I would say we need to look after them from zero rather than from when they become somebody. Thank you so much. Thank you. Thank you. Well, I've always been an admirer of Anna Villa, and she was one of, I've always loved wearing handloom saris, and I promote it in a big way myself, So when Anna Villa came out with her first collection, I remember seeing her saris in a picture and saying, oh my God, who's the designer of this gorgeous creation? And I love the fact that when she started out also, she started doing these lovely muted pastel weaves, which were hardly to be seen at that point, and she had a very distinct style of her own. So when you saw an Anna Villa sari, you knew that it was hers. And from then on to now, I've always worn her stuff, always her sari. She's been so nice, and she makes sure that I have, the best pick of every time she comes out with nice stuff. And now I'm just so happy that she's taken it to another level, where she has her signature stamp on the stuff she does and the weave that she produces. But it's also, and it's dramatic, but it's dramatic in its simplicity. It's not there shouting for attention, saying, look at me, but it's there just by the simplicity of the beautiful magic of that weave. You know that you're in something special, which is what she does. Do you wear only branded or designer clothes, or you are okay with anything that you're comfortable in? How is it? It's because I'm in an industry which requires you to wear many hats, look different all the time. If you ask me what is my preferred way of dressing, then I think it's saris. It's always been saris, and I remember wearing saris even when people used to think that only aunties wear saris. I said, you know what, I'm young, I wear saris. I think it complements, the fabrics and the style, the form. It complements the Indian woman the most. And no, I'm not an auntie. But even then, I think I don't go just for branded clothes. In fact, I wear anything that has character and which I wear. Not, I dislike when the clothes wear me. I'd like to wear the clothes for a change. Ma'am, दो स्पोर्ट्स स्टार हैं हमारे जो इंडिया को प्राउड करेंगे। 6:30 बजे सब लोग घर पहुंच जाओ, मैच है फाइनल, सब लोग। हम लोग को नहीं मिलता। I इस जर्नी में बहुत काफी बड़ा
I think it's a victory against all odds. हम सब जानते हैं कि हमारी देश की unfortunately स्पोर्ट्स की जो ट्रेनिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना प्रोत्साहन नहीं देता है स्पोर्ट्स पीपल को, एंड दे हैव टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑल ऑड्स डिस्पाइट द लैक ऑफ ट्रेनिंग. One has been hearing horrible stories about how the administration has gone in business class, but all the sports people are in economy. Not that economy and business has anything to do with it. It just shows कि आप दर्जा क्या दे रहे हैं अपने स्पोर्ट्स पीपल को. और वहाँ जाके भी these people have performed against everything that's stacked. उनके फिजियोज नहीं है, उनके डॉक्टर्स नहीं है, उनके कोचेस को टिकट्स नहीं मिले जाने के, and they've done it. And I'm very happy to see, not that it's a war of the sexes, but तीनों लड़कियाँ हैं. एक ऐसे शहर से जहाँ पर फीमेल इन्फेंटिसाइड का सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स होता है. I think this is going to prove that I think it's a wake-up call to the country to say you should send your children into the field of sport bedhadak, because they can get you more glory than you can ever imagine. And the second thing is for the government to wake up and say we've got the talent, we've got the physique, we've got the training. You just have to put in some decent money behind it. Right. Really not trying to ruin the mood, but there are some people who try to discourage. I would say like even if we are winning, they say it's not happening. Like Shobha, and her fan tweeted saying I saw that. Yeah. So what do you want to say? Like we should encourage more, or we should also look at the flaws. Like my point is, when a sports person is out there on the mat or on the field, he's not trying to not perform his best. They are out there to perform their best. Yeah. So the least thing, it's like telling a director the evening before his film is to be released, yaar, इतनी अच्छी नहीं बनाई तूने. उस वक्त तो आप कुछ नहीं कर सकते ना. You have to just be out there and motivate them and say no, let it be the best that it can. So I don't believe in negative demotivation at all. Yes, if you want to, you should do it year long. Keep the spirit of sport alive for the entire year. Not just wake up at Olympics and say, oh, you know what, you're taking selfies. Talk about it the entire year. Make it your freaking agenda, and then you have the right to comment and say they're not performing. You can't just bhadko last day when you see they're not performing well. Arey, they're not. I don't believe in that. They are out there. They're representing your country. You owe them your loyalty. It's as simple as that. Thank you. Please, under, let's do it against the backdrop.
Very nice. ये भाई लाइट बंद करो। ये भाई उनको चल भाई मैंने बहुत बार हैंडलूम कपड़े पहने, अनावला के कपड़े मैं बहुत पहनती हूँ, पर मुझे इंडियन गारमेंट्स और इंडियन फैब्रिक से मुझे बहुत पसंद आते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है आई थिंक इंडियन वुमेन पर। तो आई एम वेरी प्लीज्ड टू बी हियर। आई वांटेड टू सपोर्ट अनावला, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। सुलभ यूर फेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट और हमारी दो गर्ल्स है जो रियो ओलंपिक में कमाल कर रही है, उनको आप किस तरह एंड आई थिंक कि अभी टाइम आ गया है कि हम और पैसे और ये सब और इन्वेस्ट करें स्पोर्ट्स पर्सन्स पे इंडिया में। हमारे आई मीन वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड एंड आई एम श्योर कि हमारे यहाँ भरपूर टैलेंट है, पर दे नीड अपॉर्चुनिटी, दे नीड फाइनेंस, और होपफुली हम सब ये कर सकते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप यू नो शी गोज फॉर गोल्ड। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी अगर वो शी विन्स इट। She'll be the second, yeah, bronze we got, no? Silver. We already got a bronze. Yeah, Sakshi got a bronze. Sakshi, yeah. She'll be either a silver or a gold, yeah. But I hope she gets gold, na? Honestly, मैं actually performer हूँ, तो हम break a leg बोलते हैं, but I don't know for an athlete if that's appropriate to say. So I'm saying I hope you win. Best of luck and Jai Hind. Thank you. लास्ट वीक 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई, आपने कोई देखी रुस्तम? नहीं, मगर मैं रुस्तम और मोहिंजोदारो दोनों मैं बहुत बुरी तरह देखना चाहती हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम नहीं मिला है। आई वुड लव टू वॉच इट। मेरी फिल्म शुरू होने वाली है ना 3-4 दिन में, इसलिए तो I think you are the only source in India who could confirm if Coldplay is actually coming on 19th. One of the first few who started wearing Anna. In fact, I remember about 2 or 3 years back, she came to a shoot of mine and she said, "Why don't you wear my sari and do a press con with me?" And I remember looking at the sari and thinking, "Oh my God, why don't more people wear Anna saris?" Which clothes you prefer to wear, that brand or designer clothes? I'm sorry? मतलब कौन सा कपड़ा ज़्यादा पहनना पसंद है, ब्रांड का या डिजाइनर वेयर? ब्रांड क्लॉथ और डिजाइनर? Brand and designer is the same, right? डिजाइनर ब्रांड्स हो गया और डिजाइनर क्लॉथ अलग हो गया। I think अगर सच बोलूँ तो it is that we as actors get a lot of clothes to wear, so we wear the best of clothes. But otherwise, I don't really particularly care. So long as it looks nice and fits well and is comfortable, I wear anything. Any wishes to Indian sports star जो Oh yeah. मेडल ला रही है, हमारा देश का नाम रोशन कर रही है? ऑलरेडी लाया है और दूसरा आज आई थिंक शाम तक सिल्वर तो आ ही जाएगा, बट डेफिनेटली वी आर होपिंग फॉर अ गोल्ड। Today is the final. Yes, today is the final and best wishes and you guys rock and you make us proud and I'm so glad that you're both girls. मैम आपका कोई ओपिनियन आप रखना चाहोगे क्योंकि काफ़ी बहुत ही मुश्किल भरा उनका जर्नी है और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया इस लेवल पर, आप कुछ कहना चाहेंगे उनके जर्नी के ऊपर? I think athletes across the world are performing under difficult circumstances. हमसे भी गरीब देश हैं और हमसे भी ज़्यादा करप्ट देश हैं, तो हमारे एथलीट्स ने परफॉर्म किया है, दैट इज़ फैंटास्टिक। आई थिंक देव डन देयर जॉब।
I just wish that I have a comment on the government and I have a comment on sports authorities. That they need to pull up their act and support the talent that we have in this country so that we can give them better training, better facilities and real talent, even if it's from villages or wherever, it should emerge. लास्ट में आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, पूरा देश चलता है उनकी वजह से, हैंडलूम क्लोथ्स भी उनकी वजह से आता है, आप किस तरह से आप थैंक यू बोलना चाहोगे? एनी कमेंट? Boss, I have my limit. Worn them several times before. I think her style is simple yet elegant. For me personally, because I think that's more kind of my drift. Also, I'm obsessed with like Indian designers and handloom and Indian fabrics. So I love her clothes. आपकी कोई ऐसी particular choice है clothes के बारे में, like you want designer clothes only or branded? No, actually I'm quite the opposite. I'm quite the opposite. I'm not really into designer clothes or anything. I just wear what makes me feel good. मैम बेस्ट विशेस देना चाहिए रियो ओलंपिक में जो दो Wow, yes, of course. Huge congratulations to the athletes that have won and wishing all the success to the ones that are yet to compete. Yes. And they're doing us proud and yay! Thank you. What do you want to say about Anabila, her collection, your association with her? कुछ बताएंगे हमें इसके बारे में? Sure. So Anabila is a wonderful craftsman and she really knows how to weave a story. And I feel the sexiest in a sari. So Anabila enables us to really find the goddess in us, and really I'm amazed by how she's just reinventing herself while keeping her own style and signature alive. So I'm very excited for her new store, and I hope more and more people wear and drape an Anabila story. Thank you. Thank you. किसका है? अरे अपना है लगा। It's a lot of mics. Some reporters are not. Tell me.
Yes. Well, Annavilla is a very, I really like her work, you know. She's a very, very simple person. Every time I've met her and I've interacted with her, I really like the way she is in life. She's very minimalistic, simplistic, and I think her clothes also exude that. I love the fabrics. It's mostly linen and sarees and the blouse and the cuts. It's really modern but very wearable, you know, and very light. बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सिंपल है और ये जो टेक्सटाइल है वो यूज़ करती है बहुत ही सॉफ्ट है, थोड़ा क्रीज ज़्यादा पड़ जाते हैं तो संभाल के पहनना पड़ता है, बट मुझे बहुत पसंद है उसका स्टाइल. तो आई एम वेरी हैप्पी फाइनली वी हैव अ स्टोर एंड also it's an afternoon even today and it's a really nice sunny monsoon afternoon, so it's just perfect. I can't wait to actually go in and see the store. I think I'm going to buy my mother something. Her birthday is coming, so yeah. Then we really see, we always see that the youth really attract towards handmade clothes. Right. And being as a young woman, how do you like handmade clothes? Handloom, I feel is, you know, our country has the best textile in the world, you know. Probably the only country that beats our country is Bangladesh, but that's also a lot of handloom and it's more or less the same culture and traditions. And I think we are so rich in terms of handloom and the textiles and the fabrics that are made here, which are very, very native to our country. All the organic stuff that you know, which are actually extremely overpriced these days all across the world, are all exported from our country. So I think it's time that we preserve the handloom because also हमारे यहाँ पे जो कारीगर हैं, they're not paid well. They really find it very difficult for them to, you know, make ends meet, irrespective of the quality of the fabric they make. And I think that we need to encourage a lot, and I'm very happy that all of us and a lot of youngsters have started wearing handloom much more than, you know, these the synthetic materials, which is great because I just hope we revive the trade, you know. And there are so many people who are amazing artists. They don't make enough money in spite of having such a great, tradition of fabric. Ma'am, in the Rio Olympic, Sakshi Malik won the bronze medal, and today she will be playing for the final. I mean, we first saw Deepak Karmakar, then we saw Sakshi Malik, then PV Sindhu will play today. Yesterday was a great match again. I missed the match because I was shooting, but I did see the semis, the quarters, and there was Aditi Ashok, who's playing really well, and the women are doing us so proud. So I think it's a glorious time for all of us. And but you know, unfortunately, most sportsmen are not given the basic equipment, the basic things they need for training to go at that level. You know, and I think it's time that we open our eyes and realize that what we are doing, you know, whoever, all these girls, and not only these people who are winning, but also the rest who've not been able to win. It took a lot for them to go all the way to Rio and perform well, and incredibly proud of them. And I think the more we do for them, the little, you know, and the government should do something about cricketers and sports, about sportsmen and not just cricketers. Thank you so much. टेररिस्ट अटैक तो नहीं हुआ है ना? देश का नाम हिंदी में आप बोलिए. Okay, Swara, firstly, क्या कहना चाहेंगे अनाविला के बारे में, उनके कलेक्शन के बारे में? How happy are you for her? Well, I think it's amazing कि अनाविला ने स्टोर लॉन्च किया है. वो बहुत ही
कमाल की टैलेंटेड और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ विजनरी डिज़ाइनर हैं। मैंने अक्सर उनकी साड़ियाँ और उनके कपड़े पहने हैं, तो आई डेफिनेटली हैड टू बी हियर टू सपोर्ट हर एंड ऑल्सो टू से थैंक यू टू हर बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरे करियर के अर्ली स्टेजेस में। आई थिंक अनाविला बहुत ही स्पेशल डिज़ाइनर हैं क्योंकि उनका फैब्रिक सिलेक्शन से लेकर जो उनका एक सेंस ऑफ डिज़ाइन है वो इतना रूटेड है, उसमें हिंदुस्तानीपना भी है, इंडियननेस भी है, लेकिन साथ ही साथ उनके जो खासकर ड्रेसेस के जो सिलुएट्स हैं वो बहुत मॉडर्न डे और आज के ज़माने की जो लाइफस्टाइल है, बहुत स्पेशल डिज़ाइनर है अनाविला। ओलंपिक में आज खेलने जा रहे फाइनल, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मतलब हम क्या ही मैसेज दे सकते हैं अपने सारे कमाल के इंडियन एथलीट्स को, दुआओं के अलावा और बहुत ही वार्म बेस्ट ऑफ लक के अलावा 125 करोड़ लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं और हमारी विशेस आपके साथ हैं, तो पूरा विश्वास है कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे। आई थिंक कि मैं ज़रूर ये कहूँगी कि ऑफ कोर्स गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मिल जाए तो बहुत ही कमाल की चीज़ है, वी शुड ऑल फील प्राउड, लेकिन बावजूद इसके हमें इस बात का बहुत गर्व होना चाहिए कि ये सारे 119 या 120 एथलीट्स, भारत एक ऐसा देश है जहां स्पोर्ट्स के लिए, स्पेशली क्रिकेट के अलावा स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। तो और कई ये जो खिलाड़ी हैं ये बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आते हैं, एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां इनके पास बहुत ज़्यादा साधन नहीं है, तो अगर वो अपने जीवन में ये सारे ऑब्स्टिकल्स पार करके रियो, इस बात में हमें बहुत गर्व महसूस करना चाहिए। तो मेरे लिए ये सब ऑलरेडी विनर्स हैं और बहुत ही कमाल के लोग हैं एंड आई थिंक दैट आई एज एन इंडियन एंड ऑल ऑफ अस एज इंडियंस, हमें इनके ऊपर बहुत गर्व होना चाहिए। वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दैट। स्वरा, आपको एक ऑफ टॉपिक पे एक सवाल पूछना चाहूँगा बिकॉज आई वांट टू नो योर ओपिनियन। बायोपिक्स आजकल बहुत बन रही है बॉलीवुड में, so what do you want to say about it? Is it a good trend and is it working because all the A-listers are opting for biopics, so has it become like a formula कि बायोपिक करो तो इट विल बी अ सक्सेसफुल फिल्म? व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? वेल आई थिंक कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा ये होता है कि जब एक कोई किस्म की फिल्म, एक जॉनर की फिल्म, एक टाइप की फिल्म चल जाए तो फिर बहुत सारी ऐसी फिल्में बनने लगती हैं। तो ये सिर्फ बायोपिक्स के साथ नहीं है। आई थिंक कि आपने सही कहा कि आज के ज़माने में बायोपिक्स का ऐसा लग रहा है कि चलन है, लोग पसंद कर रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि ऑडियंस को भी अच्छा लगता है कि कोई एक ऐसा ऐतिहासिक शख्स या एक ऐसा शख्स जो अभी जिंदा है और जिनसे हम रिलेट कर पा रहे हैं, जिनके बारे में हमने सुना है, उनको फिर स्क्रीन में देखने में एक अलग मजा आता है। आई थिंक कि अगर अच्छे से बनाई जाए कोई भी फिल्म अच्छी होती है, चलती है, आप फॉर्मूला की तरह अगर देखने लगे और कि अच्छा एक ये डाल दो, एक वो डाल दो, एक गाना डाल दो, एक हीरोइन डाल दो, आप एक कोई नेगेटिव कैरेक्टर डाल दो, तो फिर उसका बुरा ही असर पड़ता है फिल्मों पे। पर अभी तक मैंने जितनी भी बायोपिक्स देखी हैं वो काफ़ी बेहतरीन हैं और मज़ेदार हैं, लेकिन शायद हमेशा बिल्कुल इतिहास से 100% मैच नहीं करती हैं, बट I guess that's okay. We have the right to take some liberties. आप कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना चाहेंगे कोई बायोपिक में इन फ्यूचर? मैं 2 किस्म के कैरेक्टर्स को करना चाहूँगी। एक मैं डेफिनेटली लाइफ में कोई हिस्टोरिकल करना चाहती हूँ, एक ऐसा शख्स जो इस ज़माने का नहीं, किसी पुराने ज़माने का है, क्योंकि एज एन एक्टर, एक अभिनेता के तौर पे मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग होगा। और दूसरा कोई भी मैंने ये पहले भी कहा है, जो आप लोगों ने कवर भी किया, जैसे कि इंदिरा गांधी जी मुझे लगता है एक बहुत ही दिलचस्प किरदार हैं बायोपिक के लिए, और भारत वो एक बहुत अहम शख्स रही हैं भारत के इतिहास में कई कारणों से, तो आई थिंक कि उनकी बायोपिक बननी बाकी है। What about बाला साहब ठाकरे? डेफिनेटली, मतलब लेकिन आई थिंक एक तरीके से सरकार उनके ऊपर ही बनी थी। थैंक यू।